Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in today's result, many of you have cleared IBPS, RRB, PO, Clerk, Scale 2, Scale 3, but some of you are placed in reserve list. And many of you have asked me, sir, tell us what is the probability of our getting job if we are in reserve list. Now, reserve list means you may get the job, you may not get the job. This is the concept. That means after cutoff, they place some candidates, maybe 10%, more than 10%, sometimes it is 20%, sometimes it is 10%, sometimes even it is more than 20%. So there is no fixed ratio. They have said adequate number of candidates they will keep in reserve list. So if you are in reserve list, hope is still alive. If we see the probability whether I will get clear in reserve list or not, if we see the last year experience or past year experience, all candidates they don't get clear in reserve list. But some of them may get clearance as a job. So if a candidate is in reserve list, he cannot either think that he or she is selected or can think he or she is rejected. It is a situation, anything can happen. This is a sort of a lottery that may you may get this job, may not get this job. So everyone who is in reserve list must prepare for future exams with complete dedication. Reserve list, if you want somebody to predict, it is difficult to predict. But if you are very close to cutoff, chances are high. If you are far away from the cutoff, chances are lower. But there are occasions where even the cutoff, the candidates, those are last in the reserve list, they also got the job. And sometimes it has happened, the people, those were very close to the cutoff, they could not get the job. Because this is dependent how many people they will take from the reserve list, how many people will be there where the bank will decide to take from the reserve list. So because in RRB the pattern is different. It has nothing to do with non-joining or resignations like State Bank of India. In State Bank of India, they adopt the pattern for SBI Junior Associate. If in first list people don't join or resign after joining, they take it from the wait list 1, 2, and 3. But in RRB, there is no such thing. Some people say there were this much number of vacancies, still that bank has not taken. Reserve list does not mean these are candidates that is to be considered for unfilled vacancies or resignations. These are additional pool. Even a bank who has not requisite for the main list, they can still call some people from the reserve list. So reserve list is a open pool from where the respective RRBs may take people, may not take people. Some people they apply for RTI, how many people have joined, how many have not joined, and then they start calculating whether I will get the job or not. It is just consolation to yourself. It has nothing to do with non-joinings or resignations or unfulfilled vacancies. Reserve list means these are close to selection. This is a additional pool available for the banks to absorb if they need. So even the entire pool may be absorbed, or some of the people from the pool may be absorbed. So it's an open deal for each and every RRB reserve list candidate. Don't confuse with the system of State Bank of India Junior Associate. In SBI PO, they don't have any wait list. So every bank has its own system of taking the manpower. Okay, so I think that satisfies some of the queries that we were waiting. There was a lot of vacancies in one bank. Why they have not taken? This is their prerogative. They may take or not. Reserve list means it is additional pool. From this additional pool, it is the prerogative of the banks whether to take it or not. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज रिजल्ट आया, काफ़ी लोग IBPS, RRB, PO, क्लर्क, स्केल 2, स्केल 3 में क्लियर कट पास हो गए। कुछ लोग रिजर्व लिस्ट में चले गए। जो लोग रिजर्व लिस्ट में गए हैं उनका कहना था कि सर एक
वीडियो बनाइए, हमें समझाइए हमारा क्या चांस है। देखो, जो मैं इसमें बात बताऊंगा वो बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा। कुछ लोगों को वो अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, मगर हमारा चैनल है राइट एडवाइस एट राइट टाइम। जो एक्चुअल चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। उसके अंदर कुछ लोगों के वो मन माफिक भी हो सकता है और उनको निराश करने वाला भी हो सकता है। रिजर्व लिस्ट का मतलब है एडिशनल पूल। अब इसमें से जो रिस्पेक्टिव आरआरबीज हैं वो कैंडिडेट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। इसको आपने एसबीआई की वेट लिस्ट से कंफ्यूज नहीं करना, जहां पर नॉन ज्वाइनिंग और रेजिग्नेशन के अगेंस्ट वो लोगों को एब्जॉर्व करते हैं। आरआरबी के अंदर इसका कोई लिंक नहीं है कि मेन लिस्ट से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं ज्वाइन किया, उससे कोई कंसेप्ट नहीं है। आरआरबी रिजर्व लिस्ट का मतलब है ये एडिशनल कैंडिडेट्स हैं जो अवेलेबल हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, और अगर वो कंसर्न आरआरबी चाहें तो उनको ले सकते हैं। तो इसलिए आरआरबी की रिजर्व लिस्ट से क्लियरेंस इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो रिस्पेक्टिव आरआरबी है वो कितने कैंडिडेट ड्यूरिंग द ईयर लेना चाहता है जब तक नेक्स्ट सिलेक्शन का रिजल्ट आता है। अब क्योंकि इस सिलेक्शन का रिजल्ट आ गया, नेचुरल है कि जो पिछले रिजर्व लिस्ट में लोग हैं उनको वो नहीं लेगा, इसी से लेगा। मगर आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ती है मैन पावर की, अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल के अंदर, तो वो लोग रिजर्व लिस्ट से रिक्विजिशन करके कैंडिडेट्स को उठाते हैं। इसलिए आप कितना नज़दीक है कट ऑफ के, कितना दूर है, ये तो एक फैक्टर है ही। क्योंकि अगर बुलाए जाएंगे तो जो जितना नज़दीक है कट ऑफ के उसका पहला चांस है जाने का। मगर इससे कोई हम ये कंसोलेशन नहीं ले सकते कि मेरा जरूर हो जाएगा, और ये भी नहीं हम निराश हो सकते कि काफ़ी गैप है तो मेरा नहीं होगा। क्योंकि पिछले वर्षों में कई बार ऐसा देखने में आया है कि सारी रिजर्व लिस्ट भी एब्जॉर्ब हो गई, और कई बार रिजर्व लिस्ट में बहुत कम लोग एब्जॉर्ब हुए। कई बैंकों में लोग आरटीआई लगाते रहे, पता लगाते रहे कितनी सीट खाली है, कितनी सीट खाली है, मगर जब रिजर्व लिस्ट आई का डेट आई तो उसमें से उन्होंने नहीं लिए। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि रिजर्व लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज है उसको वो भरेंगे। रिजर्व लिस्ट का बेसिक कंसेप्ट है, ये एक एडिशनल पूल आईबीपीएस क्रिएट करता है कि अगर किसी भी बैंक को रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट बनती है ड्यूरिंग द ईयर तो वो इस पूल से ले सके। तो इसको हमें मिक्सअप नहीं करना है, क्योंकि हर बैंक का अलग अलग सिस्टम है। एसबीआई पीओ में रिजर्व लिस्ट बनाता ही नहीं है, क्लर्क में बनाता है, मगर उसमें वो 50% तक वेट लिस्ट में कैंडिडेट लेता है, मगर उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग भी है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है अलग अलग बैंकों के, इस डिस्टिंक्शन को हमें समझना है। अगर आप रिजर्व लिस्ट में हैं तो आप मान के चलिए ये एक लॉटरी है, ये लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। इसलिए आपको फ्यूचर एग्जाम्स की पूरी मेहनत मशक्कत के साथ तैयारी करनी चाहिए, और भगवान ने चाहा तो रिजर्व लिस्ट से भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। मगर इसके अंदर कोई भी आदमी आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपका जरूर हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरी नेचर है, मैं बिल्कुल जो भी बात स्पष्ट होती है वो अपने वीडियोस में उसका जिक्र करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।